We'll start. Before going to everything what we are going to cover, just I want to show you something, and then from there we'll cover it. Okay. So let's see. So have you seen this one? क्या लगता है आप लोगों को? एंड जो अभी आपने देखा, व्हाट इज दैट? किसी पिक्सार या फिर ड्रीमवर्क्स की मूवी का क्लिप है या फिर किसी इंटरनेशनल स्टूडियो का हैव वी डाउनलोडेड एंड देन फिर उसका एक रील बना के वी आर शोइंग इट? व्हाट इज दिस? ओके, सो जो अभी आपने देखा है दैट इज एक्चुअली द वर्क we have did inside of PW. This is the work of the inside 3D team. They worked on this. Okay, let's see it again. And if you can see this again, I'll just show you that. This time, just see with the logo. Okay, this is all done with this 3D team. All the art is done inside of the physics wall. I guess ऑडियो आ रहा है आप लोगों को? इस वीडियो का ऑडियो विजिबल आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? ऑडियो इज नॉट कमिंग. ओके सर, ऑडियो नहीं आ रहा. ओके 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 ओके. Let's okay. So let's I'll cover again what we have said and everything. So what we're going to learn this today is like a master class. एक it's not about like a software कि हम लोग सॉफ्टवेयर में क्या करने वाले हैं and all those things. This is all about कि what the 3D is and 3D को आप यूज कैसे करोगे and उसमें AI का कितना रोल होगा, हाउ मच कि जनरली अभी काफी हर जगह ट्रेंड है कि यार AI AI.
तो विल जनरली टॉक अबाउट दिस आल्सो कि एआई का उस पे आपका रोल कितना होगा, हाउ मच यू विल क्रिएट विद दिस एआई, एंड आपका पूरा प्रोडक्शन पाइपलाइन क्या होगा कि हाउ वी क्रिएट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश इट, ठीक है, एंड विल सी दैट। सो जो रील अभी आप लोग देख रहे थे, दैट इज रील डन ऑल बाय द 3D फिजिक्स वाला, एंड देन as a artist, it's the whole complete pipeline, right? So let me just go with this, what is actually, right? So आप लोग जब स्टार्ट करते हो कोई भी स्टोरी टेलिंग या फिर 3D बनाते हो, तो व्हाट यू विल स्टार्ट विद दिस, आप लोग स्टार्ट कैसे करते हो, व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन? अभी ऑडियो क्लियर है, सबको ऑडियो आ रहा है, राइट? ओके ओके, कूल कूल कूल। ओके, आई गेस सबको ऑडियो क्लियर आ रहा होगा। So my question is to you guys, कि when you start with this, what is most important in this your workflow when you start as a 3D? What you prefer first? आपका सबसे main important change क्या होता है when you start this one? Okay, so let's start. Generally, when you start with this, we know we talk about this 2D या 3D दोनों के बारे में बात करेंगे कि 2D क्या होता है and 3D में किस तरह से काम करते हैं. But the main topic about this one कि आपकी स्टोरी क्या है, व्हाट इज योर स्क्रिप्टिंग, राइट? आपकी स्क्रिप्ट क्या है, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट आपकी स्टोरी टेलिंग क्या है. सो अभी जो आपने रील देखा, एवरीवन दैट रील हैज अ सम स्क्रिप्ट एंड सम स्टोरी व्हेन यू वर्किंग विद दिस, जैसे आप काम करते हो. सो आई जस्ट शेयर विद स्मॉल जो भी आपके साथ है. सो लेट मी गो विद दिस वन. ओके, सो इफ यू सी वी हैव लाइक अ वर्क ऑन दिस स्टोरी. अगर मैं एक स्टोरी पे स्टार्ट करता हूँ, सो वी स्टार्ट विद द स्क्रिप्ट. द फर्स्ट मोस्ट important thing, anything before going to touch any kind of software, right? So we'll start with the script, and this is the most important thing. We'll work on this, the storytelling, जो कि शायद बहुत लोग नहीं करते हैं, है ना? So when you do that, एंड ये आपका एक बिग बैकबोन बोल सकते हो, इसको एक बैकबोन बोल सकते हो किसी भी स्टोरी टेलिंग में. अब जब भी आप ऑन स्क्रीन करते हो या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर, डेफिनेटली एआई विल हेल्प यू इन दिस. बट आप एआई को अगर कमांड भी देते हो एंड यू हैव टू डायरेक्ट इट कि आपकी स्टोरी क्या होगी एंड एवरीथिंग एंड इमोशंस क्या होगा, दिस विल बी जनरेटेड वंस यू डन योर स्टोरी, वंस यू फाइनल योर स्टोरी. एंड ऐसा नहीं है कि जनरली व्हेन यू क्रिएट एवरीथिंग इट स्टार्ट विद 3D तक एनिमेशन तक पहुंचने से पहले जो पूरा प्रोसेस है दैट कैन बी डन इन द होल ईयर. इट विल गोज बैक टू स्क्रिप्टिंग, या स्टोरी कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग. सो अगर मैं स्क्रिप्टिंग के बाद अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाऊं, सो दैट इज जनरली वी स्टार्ट बिल्डिंग दस आपका स्टोरी बोर्डिंग, राइट? सो जितने भी आप मूवीज देखते हो, एंड ओके, सो जितने भी आप मूवीज वगैरह देखते हो, सो उसमें हैव यू लाइक द स्टोरी, स्टोरी आपको ज्यादा अच्छा लगता है या विजुअल अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है सर? ओके, सो द थिंग व्हेन यू स्टार्ट विद दिस, जो भी आपका स्टोरी होता है दैट इज आप कवर करते हो एज अ स्टोरी बोर्डिंग एंड एवरीथिंग, एंड दैट स्टोरी बोर्डिंग इट विल क्रिएट अ बेस जहाँ से आपका एक पूरा स्टोरी टेलिंग जहाँ पे कवर करते हो. एंड इट्स ऑल डन इन पेपर. इट्स इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, राइट? ये सब कुछ आप पेपर से स्टार्ट करते हो. यू डोंट नीड सॉफ्टवेयर फॉर दिस. आप पेपर से स्टार्ट कर सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन टेक हेल्प विद द एआई. यू कैन जस्ट आप हेल्प एआई की भी ले सकते हो, एंड देन दैट कैन बी डन, राइट? एंड once you done everything, then it's come to the biggest part where you see this character design, right? So जब आप start करते हो as a like a any kind of 3D pipeline and all those kind of thing. So the thing is, for that actually this is the first time we are doing all this from the home. So if any issues there, please let me know.
I'll connect again. Yeah, sure. Definitely. Okay, so let's go back to this again and then I'll share it again. So the concept for this 2-day working and what we are going to do this 2-day masterclass. And this is generally, it's not about the any software, right? So it's all about what we are going to build. And today we'll just about understand the storytelling, what the storytelling will be, and आप स्टोरी टेलिंग करते कैसे हो, आपका एक पूरा प्रोडक्शन पाइपलाइन क्या है, एंड उसमें एआई आपको कितना हेल्प करने वाला है. दिस इज जनरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड द डे टू इट्स मोस्टली विल बी द लाइव डेमो कि हम लोग 3D में करते कैसे हैं, एंड देन उसको विल डू ऑल दोस थिंग. ओके, सो let's see. So this is the first already you have seen the demo what we have did, but or some reason the audio is not capturing that. I'll just look into this one. So sorry for that. Okay, so let's continue anyhow. So what we'll cover into this, like what's the difference when you are talking about this 2D and the 3D? What the difference in this, right? So when we see this, the concept in the 2D and the 3D is all drawn, hand drawn. It's not generally it can be digital भी कर सकते हो, and then it can be also done through as a paper. And 3D is whole different game. So when we come to the 3D and everything, so we'll talk about this 3D, not about the 2D now. So maybe 2D will cover on the stream and everything. So we'll cover it. Okay. And when we talk about the 3D, it's not about आपकी जो 3D मूवी सिर्फ बहुत लोगों को लगता है कि नहीं 3D तो यार सिर्फ पिक्सार, ड्रीमवर्क्स और गेम्स में यूज होता है. नो. सो while working with this physics wala and last 3 years, and we generally work so many projects like AR and VR, ticket TV films and ad, and they have also like a medical team and doctor teams also. They generally teach people. So they create model through as a 3D to लोगों सिखाने के लिए, right? And 3D artists भी उस पे काम करते हैं, and that is most challenging part I have faced in this year, because हम जो कैरेक्टर बनाते हैं and everything काफी anatomy wise, but यहाँ पे when we doing all this as a medical के लिए they need actually very precise, very like accurate has to be. अगर आप कोई cavity या teeth बना रहे हो या human structure बना रहे हो, every vein structure has to be accurate like a human body में जैसा होता है. So and जितने भी artist लोगों ने वहाँ पे they worked and they are very good in this anatomy and everything. Okay, so it's not about like I said movie and film में आप देखते हो, right? So that is also we have did here, right? And most of the thing. Okay. Okay. And the elephant in the room, the most जो सभी लोग बोल रहे हैं, and we all talk about AI and all those things, उसका कितना बड़ा role है and in this 3D platform में. So what do you guys think about this? Because अभी काफी सारे previous stream में भी this is the biggest topic with AI कि AI will replace artists or it's making you faster. And I just want to know जितने भी आप लोग देख रहे हो, क्या लगता है आप लोगों को? What do you guys think about this? Okay, cool. So if I'm talking about AI, अगर आप लोग AI को लेके is like very scared about that कि नहीं this will replace the artist and everything, definitely it will replace you. अगर आप अभी भी पुराने तरीके से काम कर रहे हो and then you are not upgrading yourself, so definitely जो बंदा AI कर रहा है and plus also as a good artist into this, वो आपको तो डेफिनेटली रिप्लेस करेगा. ठीक है, इतना तो आपको ये समझना चाहिए. एंड दिस इज नॉट गोइंग टू खत्म नहीं होने वाला, दिस इज गोइंग टू स्टे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट आपको यू शुड लर्न दैट हाउ टू यूज दैट आप अपने इंटीग्रेट, एंड देन आई विल शो यू. एंड ऑलरेडी प्रीवियसली काफ़ी स्ट्रीम में या मास्टर क्लास के ऊपर ऑलरेडी टॉपिक के ऊपर सर ने काफ़ी लिया हुआ.
So if you want, you can go to this SOD School of Design channel पे and then जाके देख सकते हो, and शायद आपको काफी help मिलेगा. And then little bit I'll cover into this कि how we can use that into AI into 3D and आप अपना workflow कैसे pass कर सकते हो. And अगर AI के term में मैं बोलूँ, and ओके सर, आप अपना वीडियो कैप्चर का साइज थोड़ा कम कर लीजिए. ओके, जस्ट अ सेकंड. और maybe I replace it somewhere here. Now अगर स्ट्रीम से दिख रहा होगा तो let me know. I'll just have replaced yeah, in the corner. So that will be, I guess, it's visible now. Up visible? Yeah, that's good. Good, good, good. Okay, so let's come back to the topic again. And if you guys ask me about this AI and all those things, and अगर मैं AI के बारे में बोलूँ तो I can say ये मेरे लिए blessing है. I can see this as a blessing. Why? जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन, जब आप आपने रील देखा 3D या किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, सो व्हेन वी स्टार्ट तब एआई ऐसा कुछ था नहीं, राइट? सो टू फाइंड सम रेफरेंस, किसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, टू फाइंड सम स्टोरी एंड एवरीथिंग, एंड इट टेक लॉट ऑफ टाइम. जनरली काफी टाइम लगता था, हफ्ते लग जाते थे, महीने लग जाते थे. व्हेन वी वर्क ऑन सम शॉर्ट फिल्म एंड कुछ बना रहे होते हो तो प्री प्रोडक्शन स्टेज पे व्हेन यू सी हैव सीन दैट, अभी जैसे मैंने स्क्रिप्ट दिखाया, राइट? सो वो सब करने में काफी टाइम लगता था, राइट? नाउ द थिंग इज, अगर आप किसी भी एआई टूल में, चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर क्लाउड वगैरह में जाते हो, एंड देन यू ask about that कि hey, I just need a few different short story based on this topic, give me 10 different ideas. Within a second it will give you that idea, right? And it will throw back like random ideas and everything. And but the most important role you guys will play, कि as a human you will come connect as an emotion, and आप decide करोगे कि which I have to keep or not, right? So I don't know कि how much people will think about कि ये blessing है कि नहीं. I'm not about that. So generally they scared कि नहीं AI है तो they will replace the artist. It's not going to replace you. Generally it is going to be make you much faster. So आपका काम करने का तरीका स्पीड होगा. जो हम हफ्ते भर में, महीने भर में बनाते थे, that we can done in within a day or maybe 2 दिन. I'll show you some AI did some R&D with this AI short film 3D and all, and believe me, that is very fun to do it. So, and plus, and what we're going to learn with this two masterclass, also 3D and all, 3D का pipeline क्या है, and how we create the whole movie out of this one simple script to the screen. So that is generally fun. So let me know in this chat if you can think about this key AI generally going to replace anyone. Okay, cool. Okay, let's move on. Okay, so I cannot show those like clips and everything, video clips, but generally I'll see maybe something. So any tell me any Indian movie which you guys like. कौन सा ऐसा मूवी है, 3D हो चाहे 2D हो, which any kind of movie which you guys like it. Tell me. I have given few names here also, but you guys tell me which movie and you guys like and why you like that. आपको वो अच्छा क्यों लगता है? अगर आपको लगता है तो क्यों लगता है? That's the reason I just want to know कि bunch of the audience what they think about this, कि international movie, Disney Pixar level, and what about the Indian story, and आपको क्या which you like and why you like that? Let, let me know in the chat. Okay. Meanwhile, we'll just continue. Recently, there's a something maybe you आप लोगों ने भी देखा होगा. The I can say the Indian James Cameron and SS Rajmouli, अगर आप लोगों को पता है, who created the Bahubali.
right? And he is making one of uh, movie with this 2D style. It's not 2D, it's a 3D, but it's look like a 2D. And बाहुबली टनल वाला, हाँ, कितने लोगों ने देखा है इसका ट्रेलर? आई गेस इसी ईयर आया था, एंड 2027 में इसका एक फुल मूवी गोइंग टू बिकम। कितने लोगों ने ये देखा था, एंड कितने लोगों ने ये देखा, एंड व्हाट द डिफरेंस इन दिस? ओके, लेट मी नो इन द चैट अगर आपने देखा है, या फिर व्हाट यू लाइक इन दिस वन. You guys have to be proud because this is done through as an Indian director, and who's going to do that Eternal War, Bahubali. Just अगर नहीं देखा है जाओ एक बार देखो, and every time when I watch that trailer, it give me a goosebumps. Most of that because the style, the design, the cinematics, what you call that, जो इंडियन कल्चर है जो उसने ऐड किया हुआ है इसने, सो मैथोलॉजी एंड एवरीथिंग, इट एक्सट्रीम लेवल, काफी बहुत ही अलग है, जो अभी तक शायद किसी इंडियन ऑडियंस ने नहीं देखा था, ठीक है? And if you really want to know about the behind the scene and all, and already बाहुबली का नेटफ्लिक्स में उन्होंने एक पूरा एक सीरीज डाला हुआ है फ्रॉम स्टार्ट टू बिगिनिंग, कि लाइक हाउ दे मेड दैट फिल्म बाहुबली पार्ट 1 है। इट्स लाइक अ प्री प्रोडक्शन से लेके until फाइनल पिक्सल तक, how they, what the thought process was and everything, उनके आइडियाज क्या थे, how they build the pre-production team and everything, how they build all the stage. So अगर नहीं देखा है किसी ने सीरीज, so definitely go and check it out on the Netflix जाके देखो. So you can understand the concept behind it. It's not about the software, वो software में नहीं था, right? The whole स्टोरी टेलिंग, पूरा एक जो उनका 2D का प्रोडक्शन, दे बिल्ड अ वर्ल्ड फॉर दोस कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर आपने देखे हैं, दे रियली क्रिएटेड दैट वर्ल्ड बिफोर गोइंग इनटू द मूवी, ठीक है? वो लोग प्री प्रोडक्शन स्टेज पे, इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर, मोर देन अ ईयर, टू बिल्ड ऑल दोस कैरेक्टर एज अ वर्ल्ड, टू विजुअलाइज इट, to that be the final pixel will be like this, ठीक है? तो definitely go and check it out, and you guys really will like it. And recently there's so many VFX movie and Indian movie came, and uh, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, few names I have written here like a Brahmastra, Arjuna the Warrior, so go and check it out. Okay, and just continue. Okay, so now let's come to this production. Already we talked about the story. अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि यार स्टोरी टेलिंग it's very easy, no? कि ये स्टोरी टेलिंग है बिफोर गोइंग टू दिस प्रोडक्शन पाइपलाइन एंड ऑल, 3D एंड एवरीथिंग, बट लेट मी कम बैक अगेन टू दिस स्टोरी टेलिंग. कितने लोगों को लगता है कि यार स्टोरी टेलिंग इट्स काफी इजी है, एंड वी कैन डू ऑल दोस थिंग, एंड दैट कैन बी डन? कितना आसान है? हमें तो सिर्फ एआई को बस तो आइडिया देना है, एंड देन एआई कैन जनरेट द स्टोरी एंड एवरीथिंग. सो व्हाट डू यू थिंक इन दिस? लेट मी नो इन द chat. Okay. So it's not that easy because that will create your base. अगर आपको, you are not a good storyteller or anything, so not going to create anything with this one. चाहे आपका production pipeline चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, चाहे आप कितने मर्जी VFX ऐड कर दो, it's not going to ऐसे बहुत सारे मूवी आपको पता होगा कि and काफी high budget movies and all those है, but still they are flop because they don't have any emotion, there doesn't have any story, जो कि they cannot connect with the real people. So it's most important thing when you telling a story, it has to be emotional touch with the human, because anyhow we are humans, it's not a machine, right? So that's the thing. Okay, let's come to this real picture into this, कि आप जब start करते हो, so मैं यहाँ पे आपको जनरली कोई सॉफ्टवेयर सिखाने नहीं आया, सो आई एम नॉट अबाउट टीचिंग यू द, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन एनी सॉफ्टवेयर in day one. Maybe in the day two I'll cover it up with how we can do all this in real time, and how we generally create a new pipeline into this, and जो भी रील आपने देखी थी, जो मूवी भी all done in inside our 3D team, so how we did all those things, and
how we moved in from the traditional pipeline into in the real time. What is the game changer into this? And I guess most of the it's my challenge to anyone who's like if professional also watching in this. So it's not about the traditional pipeline, it's about how we can adapt into the real time into our ecosystem, right? So what I'm showing right now, this is generally most common workflow we understand in 3D, right? Keep pre-production, production, and the post, right? And already I talked about little bit pre-production mein ki with your scripting, your sketching, your concept design, your character design, right? So rather than talking something, I'll share with you like this thing ki what you're scripting and all. Okay, so अगर आप छोटा सा ये देखोगे, so let me keep it make it big. So this is also like a आपने script देखा, right? And done the storyboarding based on the script and all. Now the main thing is it come to your character design, right? You will design your character, and these all are the pre-production. ये किसी software को touch नहीं कर रहे, right? This is all are the initial stage before going to your final pixel. I'll show you this also. I'll show you this if you have a time in tomorrow. So I'll show you. ये दिखाऊंगा कि जनरली ये जैसा दिखता है वैसे ही आपको मूवी में भी दिखेगा, right? It's all about कि visualization. जब आप start करते हो कि how your character will look like and well. अच्छा, कितने लोगों को पता है कि key art होता क्या? How many people will okay? How many people knows about this key? What is this is key art and all? Key art. What is a key art? Can you just type on the chat and let me know? So, key art से क्या समझते हो? What is the key art is and why this is very important whenever you're going to create any movie. इतना important क्यों होता है? Right? So before going to the suppose if you're working as a team, अगर मैं किसी team को direct कर रहा हूँ and direct कर रहा हूँ, then a team has a 50 or 100 people working on this. So as a director, as a lead, as a creative head, आपका जो main goal होता है that 50-20 people should work in the one single vision. And वो single vision तब आएगा जब when you have visualize all those things. कि आप जो पिक्सल देख रहे हो, आप जो फ्रेमिंग देख रहे हो, आप जो कलर देख रहे हो, आपका टीम भी वही देखेगा, राइट? अगर मैं ए एप्पल बोलता हूँ तो वो भी एप्पल उसी कलर में देख रहा होगा जिस कलर में मैं सोच रहा हूँ. सो इफ आई एम सेइंग एप्पल, तो आई डोंट नो आप लोग क्या विजुलाइज कर रहे हो, ग्रीन एप्पल देख रहे हो या रेड एप्पल देख रहे हो, और मे बी सम डिफरेंट कलर, आई डोंट नो. ठीक है, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम स्टार्ट करते हैं द की आर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप स्टार्ट करते हो, बिकॉज योर टीम विल बी अलाइन इन टू दिस. जो विजन आपका है, जो विजुअल आप देखना चाहते हो, राइट? So, and if you see this key art, I'll show you in this the opening RAM, like if I'm forgot that one, so let me show you that again. So if you can see, okay. So if you can say this one, this is the same shot. This is the same key art we use it. That is actually the camera angle is different, but this is actually the same key art. So that's what I'm talking about, the key art. That is very आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट मच कि कितना इंपॉर्टेंट होता है. आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हो. इट्स नॉट अबाउट कि ट्रेडिशनल आपको पेंट ब्रश लेके ही पेंट करना है. एंड यू हैव ऑप्शन, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. एआई भी आ गया है. यू जस्ट visualize it and you can tell your AI team whatever AI tool आप यूज कर रहे हो, that can be done, right? And अभी नहीं कि हाँ काफी टाइम लग रहा है and all those things, but the main thing that has to be visualized properly कि हाँ कि आपके जो भी स्टोरी है, जो भी आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो, that everything has to be done, okay? And there's a one fact I want to say, एक स्टोरी बताता हूँ. and then the thing, इसी ईयर के फेब में एक फर्स्ट, आई डोंट नो द फर्स्ट एआई मूवी ऑफ इंडियन एआई मूवी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट गो एंड चेक इट आउट. बुक माई शो में भी है. दैट मूवी का नाम है शतक. ठीक है,
So maybe if I can find for you guys. So okay, so definitely audio is not coming in there, no problem. But ये मूवी है शतक, and ये full AI generated, ठीक है. So this movie is full AI generated, and it's talking about in real story what has happened on the Indian history, RSS community के बारे में, right? Go and check it out, and you won't believe this is done by AI, right? And the direct and this इनकी जो टीम थी, that team has very few members are there. Just imagine, can you guess? Just I'll play that trailer, right? And so maybe sound is there or not, I'm not sure, but just see the visuals. संघ। अरे ऐसी क्या खोट दिखी आपको इस हिंदू समाज में जो हम में से किसी को नजर नहीं आई? देश हमारा, यहाँ की मिट्टी हमारी, लोग हमारे, तो सरकार भी हमारी ही होनी चाहिए। ये प्रतिबंध तो सिर्फ संघ को रोकने के लिए हैं। संगठन तो होगा और हिंदू समाज के पुनर्जीवन के लिए समर्पित। संघ समय की तरह है, इसको रोका नहीं जा सकता। अपनी शक्ति को संगठित करके भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। राष्ट्र का विचार सिर्फ एक ही है, त्याग, और त्याग का रंग है भगवा। त्रेता में मंत्र शक्ति, द्वापर में युद्ध शक्ति और कलयुग में केवल एक शक्ति, संगठन शक्ति। और उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी हमें मंजूर है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। ये कहानी है उस विचार की जिसे कई वर्षों में कई बार मिटाने की कोशिश की गई, पर हर बार वो और शक्तिशाली होकर लौटा। ओके, सो देखा आपने? आई गेस फाइनली शायद आवाज आ रही है, बट थैंक यू सो मच. सो देखा, दैट इज होल डन इन एआई. अगर किसी ने देखा है, नहीं देखा है ये मूवी, गो एंड चेक दिस आउट, राइट. ये पूरी मूवी एआई में बना है. एंड गेस द टीम साइज, इसकी पूरी मूवी का टीम साइज क्या है? ये पूरी मूवी बनाने में कितने लोगों की टीम लगी होगी? टेल मी what the team size of this the whole जो भी शतक की मूवी बनी थी एंड ये फरवरी में आया था, इसका टीम साइज क्या है? Let me know in the chat, then I'll let you know that. Okay, let's get back to this our topic and what we're going to do. Okay, so your visual, it's most important before going to any kind of storytelling, right? कि आपका जो विजन है, द होल टीम कैन वर्क ऑन दिस, राइट. सो ये उस कुछ शॉर्ट के विजुअल थे, जिसने अभी जो मैंने डक वाला आपको दिखाया था, दैट इज एनालिज अ की आर्ट, जो फाइनल कॉन्सेप्ट होने वाला है, जो एक्चुअली वो फाइनल पिक्सल दिखता कैसे है. सो दैट हैज टू बी ड्रॉन, वो आपको डिसाइड करना है, या मे बी योर आर्ट टीम विल डू दैट. दैट इज जनरली विल कम टू द पूरा प्री प्रोडक्शन स्टेज पे आता है, ठीक है. एंड इस और अगर मैं if I'm telling you this, this is the biggest problem. I have seen so many Indian artists or maybe Indian student
they don't give time to this one. इसको टाइम ही नहीं देता, राइट? कुछ भी बनाने के लिए बोला जाता है, कुछ भी दिया जाता है तो डायरेक्टली open 3D and do that. No scripting, no ideation, uh, no storytelling, no visual communication, कुछ भी नहीं, and they have to start doing it. So ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैंने अभी देखा है, जितने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आई हैव टच्ड, मे बी दे हैव कनेक्टेड विद दैट, और मे बी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. सो दिस सेक्टर इट्स नॉट कवर्ड. डेफिनेटली एआई इज देयर, बट जब तक आपका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, एआई कैन नॉट डू दैट. एक फैक्ट बताता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, ठीक है? जस्ट फॉरगॉट अबाउट द एआई एंड ऑल. भूल जाओ कि एआई भी अभी कुछ एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ एआई नहीं है, ठीक है? ओके, जब एआई नहीं थी तब भी पहले भी मूवी बनती थी, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड डिजिटल फिल्म एंड एवरीथिंग. डिजिटल कैमरा आया, अभी सबके पास कैमरा है. सो क्या सब कोई मूवी बना लेते हैं? नहीं, राइट? जेम्स कैमरन जो मूवी बनाएगा, एस राजमौली जो मूवी बनाएगा, संजय लीला बंसाली जो मूवी बनाएगा, सबके मूवी एक अलग अलग ट्रेडमार्क है, राइट? दे हैव अ डिफरेंट स्टोरी टेलिंग एंड डिफरेंट स्टाइल. आप जेम्स कैमरन जैसा नहीं बना सकते, संजय लीला बंसाली उसके तरह नहीं बना सकते. तो दे एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टाइल, एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टोरी टेलिंग. सो इट डजंट मीन कि यार कैमरा आ गया तो सब कोई मूवी मेकर बन गए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन. सो एआई आ गया तो इसका मतलब नहीं कि आप बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गए हो, बहुत ये हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है. आई डोंट नो ऑल दोस थिंग कि एक बेस फंडामेंटल होता क्या है, उस चीज़ों को करते कैसे हैं, कलर क्या होता है, विजुअल्स क्या होते हैं, फ्रेमिंग क्या होती है. सो इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन टू डू इट. एंड सपोज अगर आपको ऑलरेडी ये सब पहले से पता है, एंड देन आई कैन गिव यू दिस पावर ऑफ एआई टू यू, तो सोचो आप क्या कर सकते हो, ठीक है? एंड बिलीव मी, ये जो राइम्स आप देख रहे हो, जो मैंने ट्रेलर आपको दिखाई है, इनको टाइम लगा बनने में. इट्स बिकॉज दिस इज ऑल मेड ट्रेडिशनल वे में. इट्स नॉट अबाउट लाइक अ होल कंप्लीट ट्रेडिशनल प्लस रियल टाइम, बट उसको भी फास्ट कर सकते हैं. एंड दैट इज आई कैन प्रूव दैट, एंड देन आई शो यू दैट इन द डे 2, कि यार जो हमें महीनों लग जाते थे, ठीक है, एक 30 सेकेंड क्लिप बनाने में या पूरे 1 मिनट की क्लिप बनाने में, वो आप पूरे एक दिन क्या 3 घंटे में 4 घंटे में कर सकते हो, राइट? सो दैट्स वाई my main focus to as a day 1 and day 2 as in this master class, to understand and telling you guys to focus on the base, जो आपका fundamentals है, make that strong, and उसके बाद आप जो भी करोगे that can be done. Okay, so this is the same thing. This is, you can see the concept for the key art, and these are the concept for the small props, whatever जो भी environment design के लिए use करते हैं. And if you are going for the environment artist and all, so these you can have to design as a concept artist. Concept artist में बताओ, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि concept artist होता क्या. And when I went for study, जब मैं पढ़ने के लिए गया, and when I was learning all those 3D and all, so बस इतनी पता था यार, मॉडलिंग टेक्सचरिंग करो, या देयर यू कैन बिकम अ मॉडलिंग टेक्सचरिंग आर्टिस्ट, ओके, या एनिमेटर बनोगे या रिगर बनोगे. ये 3-4 ही जॉब ट्रेडमार्क वहाँ दिए जाते थे. एंड दे ऑल डोंट नो कि कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट भी ऐसा कुछ होता है, इन्वायरमेंट आर्टिस्ट भी होता है, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी होते हैं, गेम डिजाइनर भी होता है, लिबरल डिजाइन. देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द इंडस्ट्री, बट स्टिल व्हेन यू गो फॉर स्टडी, मैं इंडियन की बात कर रहा हूँ, बाहर के, तो उनको पता ही नहीं है. उनको सिर्फ पता है कि ये ऐसे मॉडलिंग टेक्सचर, आइदर यू कैन गो फॉर एनी स्टूडियो एंड डू द रीटोपो, ठीक है, लेबर वर्क करते रहोगे, या फिर आप बेसिक सा रिगिंग कर रहे होगे, या फिर एनिमेशन कर रहे होगे, बस उसके बाद आप कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है? सो द मेन कॉन्सेप्ट इज टू अंडरस्टैंड, टीच यू गाइस कि उससे आगे भी बहुत कुछ है, देन वी कैन एक्सप्लोर ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? सो let's go back to our slide, and then we'll see into this one. Okay, so before any 3D, like as I said, ki your scripting is very important.
आप स्क्रिप्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग कैसे करोगे. कैरेक्टर बाइबल इज सेम थिंग इज लाइक अ कैरेक्टर कॉन्सेप्ट, जो कि अभी हम लोग देख रहे थे. उसमें दे हैव अ डक एंड देयर सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट. सो अगर इफ यू कैन सी इन दिस, सो this all are the like character. It could be anything. It could be anything. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, right? So if I can go into this, okay. So these all are the rhymes. अब जितने भी देख रहे हो, this is all done inside our 3D team. So we worked on this last year, 150 plus rhymes. And अगर आप देखोगे तो they have a script. Whole bunch of script is done, right? This is all done with they have their own script. They have, and these all are the like a storyboarding, voiceover, the concept art and everything. So if I can go with this, any kind of thing, like just open anyone. Okay, so you can see that most of the format are same storyboarding, and you can see the concept art for the character and visual for the BG and everything. And the really you have seen this kind of but bees are flying everywhere and everything, right? So these are the concept. So अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया, राइट, टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट एंड ऑल, पहले आप लोगों ने कभी इस पर उतना फोकस किया था? मतलब व्हेन यू वर्किंग विद दिस, यस डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में जंप करते थे एंड देन स्टार्ट मेकिंग इट, कि व्हाई हम फोकस, मतलब मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ आपको? एंड जनरली विद दिस स्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स सी, गो बैक हियर into our slide, ki why I'm giving you the more focus into this. Okay, so मैं इस पे जनरली क्यों फोकस कर रहा हूँ, this section, because ये आपका from production, from post production, इसका बैकबोन है, ठीक है? अगर हम यहीं पे फेल हो जाते हैं, if you failed here, everything can be gone wrong, कुछ भी सही नहीं. Got my point? So the first thing, and अगर I'm not talking about this, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, because while working on this, this is the generally base बोल सकते हो यार, ठीक है? ये पूरा बेस है. अगर किसी कोई बिल्डिंग बना रहे हो एंड बिल्डिंग की नींव ही हिल गई है, आपकी नींव ही नहीं है, तो जस्ट इमेजिन कि उस बिल्डिंग का क्या होगा, ठीक है? स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग, योर कॉन्सेप्ट डिजाइन, एनिमेटिक्स, दिस इज द बेस, जो कि पूरे इंडिया में मैं बता रहा हूँ बहुत कम लोग हैं जो कि फॉलो करते हैं. एंड SS राजमौली का तो वो मैंने क्लिप देखा जब, तो देन आई हैव सीन कि यार ये एक बंदा है जो कि इतना प्री प्रोडक्शन स्टेज पे पूरा बजट लगा सकता है, देन वो कैपेसिटी रखता है उसका. अगर आप बाहुबली का देखोगे तो, जब भी देखोगे तो डेफिनेटली आई विल गेट अ गूज बम्प्स, राइट? And if I can show you that trailer, Eternal War, Bahubali, if it may allow. So let me see. Okay. And that was teaser. जब भी मैं देखता हूँ, it's like a give me a goosebumps, and definitely believe me. Just see this one again. अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लो. बाहुबली. जब मेरे प्यारे बेटे का जन्म हुआ, तब मुझे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका है. उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं, आरंभ था. उसे उसकी नियति तक ले जाने का. नियति जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी. देवासुर संग्राम. हट जाओ विशासुर, बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा. इंद्र मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लागनी पड़ेंगी.
बाहुबली को कौन बचाएगा? जय महाकाल। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? ब्रह्मांड का भाग्य एक मनुष्य के हाथों में है। So, okay, so this is uh, trailer you have seen. जब भी देखता हूँ इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग है। अभी तक मैंने इंडियन में किसी को नहीं देखा ऐसा ट्राई करते हुए। एंड एक्चुअली इसके जो पीछे का आर्टिस्ट है दैट्स ऑलरेडी वर्कड ऑन दिस काइंड ऑफ, अगर आर्कन ट्रेलर देखा है कभी किसी ने सीरीज, सो सेम स्टाइल है बट इंडियन वर्जन में, राइट? डेफिनेटली लुक इनटू दिस वन। ओके, सो वापस आते हैं सेम अपने कॉन्सेप्ट पे और अपने जो मैं बात कर रहा था प्री प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, कि बहुत कम है जो इंडिया में दे बेस्ड ऑन दिस कि इस पे उतना फोकस करते हैं। इफ दिस इज करेक्ट, अगर ये बेस आपका क्लियर होता है ना, एवरीथिंग विल बी फॉल अपार्ट इनटू दिस, काफी स्मूथली जाएगा। डेफिनेटली सम चैलेंजेस विल कम डाउन द लाइन। सो ओके, आई एम 3D animator, please help me. Hi Satyam, definitely I'll help you in this. Okay, so please connect with the SOD channel and keep update, and you'll definitely get that. And let me know whatever the help you needed. Okay, so let's come back to this. So once your pre-production is done, right, then we'll move on to this production stage and everything. अच्छा, कितने लोगों को पता है कि what we cover in the production में होता क्या क्या है, right? Definitely I have written this modeling, texturing, rigging, animation. So अगर मैं rigging की बात करूँ, what is the rigging is all about, right? So if I'm talking about rigging is all about like you give the life to the character. It's right. अगर हम कोई भी character बनाते हैं, whatever the character design, like suppose if this we have इस type का ही कुछ है, right? And rig can give this life to this character. So where you can animate your character and all those things. That is a basic we can learn, right? It's not about the I can bone and structure and everything. Just a basic understanding ki how we can give this life to this character. Otherwise, it will become as a statue. Okay, so let's post production. We'll cover it tomorrow, and generally I'll take a live demo with this key whole proper आपकी lighting and full and real time rendering and everything, how it can be done in one particular software. I'm not going to teach multiple software कि यार lighting इसमें कर रहे, compositing and editing also I'll do it. I'll teach you how to do everything inside of real time. No, so आपको multiple software की जरूरत नहीं पड़ेगी. So if you're working on all this, believe me, those all are free. So and you can do that. कर सकते हो, ठीक है? So before planning and everything, already we talked about the story and script. आपका character design क्या होगा and how we work on the character and everything. Environment design क्या होगा, storyboarding, animatics and everything, right? So these देखने में तो बहुत सिंपल लगता है and we overlook this, मिस कर जाते हैं, but believe me, these are the fundamentals, these are the basics, and जो कि बहुत सारे लोग when we come into this field they are not aware of this. सिर्फ उनको पता है यार कुछ एनिमेटर है तो बहुत ही अच्छा कुछ एनिमेशन बनाते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट है तो बहुत ही मतलब खतरनाक वाला कैरेक्टर बनाएंगे ऐसा कुछ, बट दे मिस ऑल दिस थिंग व्हेन यू वर्किंग विद दिस कि आपका एक कैरेक्टर है तो वो उसका एस्थेटिक क्या होगा, राइट? वो कैरेक्टर कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी साइड स्टोरी क्या है. सो इफ यू कनेक्ट ऑल दोस थिंग देन इट विल मेक सेंस टू योर कैरेक्टर. जो भी आप बनाओगे, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे किसी भी तरह का डिजाइन हो, तो that's the only major difference when you seeing your some professional or studio work or some as a fresher or student work, because there's a no emotion, there's a no story behind it. जब story कुछ भी बनाते हैं, चाहे वो environment design आर्टिस्ट हो, चाहे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट हो,
सो अगर आप कैरेक्टर भी बनाते हो तो दैट ऑल्सो हैज टू बी सम स्टोरी बिहाइंड इट, ताकि ऑडियंस कैन रिलेट इट टू दिस, दैट इमोशन हैज टू कनेक्ट। ठीक है। सो जब दीज आर द लाइक अ फंडामेंटल्स मैं बोलूंगा, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू टीच यू दिस ऑल दिस, ये आप करते करते सीखते हो। ओके, वंस यू अंडरस्टैंड ओके ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, एंड इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी डेफिनेटली, एआई इज देयर एंड एवरीथिंग टू हेल्प यू इन दिस। आपका रिसर्च कितना स्ट्रांग है, ठीक है, आप किस लेवल पे रिसर्च, पहले हमें मल्टीपल वेबसाइट, मल्टीपल ब्लॉग सर्च करने पड़ते थे, अगर मान लो कि कोई कैरेक्टर डिजाइन बना रहे हो या ऐसे कुछ कर रहे हो या कुछ प्लानिंग कर रहे हो। नाउ अभी आप लोग के लिए यार इतना इजी है, मैं बोलूँगा, जस्ट टाइप द वर्ड, आप प्रॉम्प्ट लिखो या फिर आपको बोलो क्या चाहिए चैट जीपीटी क्लाउड में भी कि मुझे ऐसा कुछ करना है, आई हैव दिस दिस आइडिया, आई वांट टू डू, पूरा आपको शीट दे देगा यार, राइट। सो दैट्स द थिंग, द पावर यू हैव, बट उस पावर को आप यूज कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। ओके। ओके सर, कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ाने वाले हो आप? ओके, सो कौन सा सॉफ्टवेयर से जनरली, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर यार, एंड 3D मैं, इट्स आई एम नॉट एज अ ब्लेंडर गुरु कि आपको डोनट कैसे बनाते हो बताऊंगा, आई एम नॉट टीचिंग अबाउट द ब्लेंडर और एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट टू टीच यू द थॉट प्रोसेस, कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है, आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एंड हाउ यू थिंक अबाउट एज अ लाइक अ क्रिएटिव हेड और एज अ डायरेक्टर, राइट, व्हेन यू वर्किंग ऑन दोस थिंग। डेफिनेटली आप फ्रेशर ही स्टार्ट कर रहे हो, बट आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा आर्टिस्ट ही रहेंगे और लेबर वर्क ही करते रहेंगे और आपसे वही कराता जाएगा। एंड इफ यू फोकस ऑन ओनली द सॉफ्टवेयर और द टूल, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना भी नहीं बोलूंगा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली इट्स देयर, इट हैज टू बी बैलेंस, कि आपका टेक्निकल स्किल भी अच्छा होना चाहिए एंड दैट आर्टिस्टिक स्किल भी, दैट हैज टू बी बैलेंस। अदरवाइज क्या होगा कि सिर्फ आपको आर्टिस्टिक स्किल ही पता है और टेक्निकल कुछ पता नहीं, सॉफ्टवेयर में कुछ कर ही नहीं सक रहे, सिर्फ टूल टूल पता है, आर्टिस्टिक कुछ पता नहीं है, तो आप कहीं भी नहीं जाओगे। सो मेक श्योर इट हैज टू बी बैलेंस, एंड बैलेंस भी इट्स हैज टू बी होना चाहिए। सो सेम थिंग, जिसने भी ये पूछा है, सो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा, एंड डे टू आई डेफिनेटली रिवील, एंड एंड ऑफ दिस सेशन आई जस्ट एक्सप्लेन कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग कवर करेंगे एंड एवरीथिंग। तो आई सी। ओके। ओके, सो डेफिनेटली सबको पता है यार, कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, विल टॉक अबाउट दिस। ओके, कहाँ पे बनाते हैं, कैसे करते हैं, डेफिनेटली कम टू द सॉफ्टवेयर। सो यू हैव ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन है, यू हैव ऑल द 3D सॉफ्टवेयर, नेम इट, अगर 3D में नहीं बोलूंगा तो यू कैन डू इट इन एआई, बट that cannot be done like 100% through AI, but you still need clean up, do all those things. I'll show tomorrow ki how much you can use in modeling, in texturing, even in animation, the use of AI and integrate into your real time engineering. Okay, so not specific software, and any whatever the software I'm going to teach, that will be journal free version. Okay, so these all things we'll talk about tomorrow, ki how we see that ki modeling and everything, texturing and rigging, so we'll cover it up. Okay. Okay, and ये पूरा एक पाइपलाइन है, दिस इज, अगर मैं बात करूं तो मॉडलिंग, टेक्सटिंग, लाइटिंग, एनिमेशन, कंपोजिटिंग, कलर ग्रेडिंग, एंड फाइनल इट्स कम टू द साउंड। और ये जो एक वर्कफ्लो, जो प्रोडक्शन पाइपलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज, अगर मैं बोलूँ तो व्हाट आई एम टीचिंग, दिस इज द बेस फंडामेंटल, बट स्टिल बिलीव मी इट्स आउटडेटेड। ओके, एंड व्हाट आई हैव एज अ लाइक, ये जनरल जो कॉमन people will use, and these production pipeline like modeling, testing, animation, lighting, compositing, color grading, and this all will go with the fundamental of the basic. But I'll share the actual pipeline we use for as a studio, and there's so many things you can eliminate and उसको reroute करके जा सकते हो, and जो आपका जो workflow है that can be much faster, and plus also जो traditional आप लोग देख रहे हो that is also can be used, but in
some other ways it's a little bit outdated. Okay. As we talked about, like same thing, I have showed the reel initially, right? So what we did actually, and मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, because I have done it. ऐसा नहीं है कि यार मैंने एक दो कुछ रील्स बनाए या फिर डेमो रील है एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज ऑलरेडी डन, कर चुका हूँ. सो आई हैव दिस एक्सपीरियंस कि करना कैसे है, राइट? इट्स मोर देन लाइक 100+ animated rhymes and everything. And if you definitely know, I'll show you the live demo without talking anything, any concept or any theory आप लोगों को बिना समझाए. I can show you this live कि करते कैसे हैं within that 2 hour frame. I know it's a challenge to show live 3D filmmaking from start to finish, so without that much of AI, but I'll take that. And then I'll show you tomorrow ki how we can finish that in that time duration from your final lighting and final pixel. Okay, so and anything अभी तक जनरली जितना भी मैंने आप बताया, what you think into this pipeline and what you guys आप लोग क्या pipeline follow करते हो? अगर मान लो कि आप मे बी एनिमेटर्स हो या प्रोफेशनल्स काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, सो आप लोग क्या फॉलो करते हो? प्लीज लेट मी नो. आप लोगों का वर्कफ्लो क्या है? डेफिनेटली आई वांट टू नो अबाउट दैट. एंड चैट में प्लीज टाइप करके मुझे बताना, एंड हो सके तो डेफिनेटली आई रिप्लाई दैट. ठीक है. सो टुमारो व्हाट वी गोइंग टू कवर, एज आई सेड कि विल बिल्ड दैट लाइव. हम लोग उसको लाइव बनाएंगे and everything can be done inside of real time game engine. We are going to learn little bit of Unreal कि Unreal में आपको काम कैसे करना है, how you can work in the inside of Unreal, how can you do all your scene creation inside of Unreal Engine, how you animate your character, how you can import your all the animations, how you can deliver your final pixel inside of Unreal, right? So once you're done from your any other DCC software like Maya, Blender or anything like that, आप उसको अनरियल में लेकर कैसे जाओगे एंड उसके बाद उसको फाइनल मूवी तक रेंडर कैसे करोगे, राइट? सो दैट कैन बी डन टुमारो. सो इन टुमारो सेशन दैट कैन बी डन. सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग जितने भी अभी तक हमने कवर किया है, और बेस्ड ऑन दिस कुछ और भी आपको अगर लगा वांट टू नो अबाउट दिस कि हाउ वी कैन डू ऑल दिस थिंग, what the like pre-production का stage है, why this is much important and everything, right? I'll just show you a little bit before closing this session and closing this uh, live stream. I'll just want to show something. कल जब आप आओगे तो please be prepared on that. So either आप सीखना चाहते हो, so either you have a Blender or any 3D software, if you want to free software use कर सकते हो, but you can use Unreal. So you can install that if you're not, अगर नहीं है आपके पास तो please install it whichever the version you are comfortable, 5.7, 5.8, whichever the version you guys are looking into that. So please install कर लेना. अगर किसी को नहीं पता है कि how to install and where you get this all, so I'll just tell you this. आप यहाँ पे जाओ, right? Search for Unreal Engine. Okay, whichever the version you are just looking at. Okay, and here's the corner, there's a download button. So download it and this will download your launcher. And वो launcher ऐसा दिखता है आप जब install करोगे तो, right? And once you install this, आपके पास यहाँ पे engine के versions आ जाएंगे. So when you click this one and have hold the version, okay, it doesn't matter आप Unreal 5 यूज कर रहे हो 4, ठीक है? अगर आपका PC 5 सपोर्ट नहीं करता, 4 यूज करो. 4B same real time also we can give, but it has some visual limitation definitely, but you will get the same thing, right? So whichever the version you guys are going to use, it's totally up to you.
and depend on your PC requirement and everything. So ये आप प्लीज इंस्टॉल कर लेना. एंड बिकॉज दो टुमारो का जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, दिस इज ऑल विल बी कवर्ड इनटू दिस इन रियल टाइम, हाउ वी क्रिएट जो भी अभी तक आप लोगों ने देखा है, राइट, फ्रॉम फाइनल पिक्सल टू योर फाइनल मूवी कैसे करोगे, एंड फुल रेंडरिंग पाइपलाइन जो हम लोगों ने रियल टाइम में यहाँ पे यूज किया है, राइट. सो डेफिनेटली आई वांट टू नो अबाउट यू गाइस कि आप लोग क्या यूज करते हो, एंड आप लोग एज अ 3D प्रोफेशनल हो तो आप लोगों का पाइपलाइन क्या है एंड आप लोग कैसे करते हो. सो प्लीज लेट मी नो इन दिस comment in the chat. So I'll, as soon as I get that, I definitely reply with you guys. Okay, so let's see. And any किसी को अगर कुछ पूछना है अभी तक के सेशन से रिलेटेड एंड एवरीथिंग, एनी क्यू, आई जस्ट गिव यू फॉर द 5 minute टू हैव एनी क्वेश्चन, सो विल कवर इट. ओके ओके सर, कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ाने वाले हो? ऑलरेडी आई हैव गिव यू द आंसर, इट इज, so it's like Unreal and Blender or anything, whatever the software, 3D software you generally use. अगर आप एनिमेटर हो तो you can use any software like a 3D uh, Blender or Maya or anyone, whichever the software you like. Okay. Okay. So cool. And we'll stop the streaming now and we'll connect tomorrow again, and that will for the live session for your we'll do all the 3D and everything in the live. Okay. See you guys. Thank you so much for connecting.